Nifty moved sharply down in today's session. So is it time to buy or shall we start selling or what has changed? Because 23,820 जो level था वो भी breach हो गया और हुआ क्या और क्या reason है? What is the reason? What's happening around? This is a very short video. I am Ashish Kyal and I thought I'll make this short video today. आज प्लान नहीं था लेकिन मार्केट का मूवमेंट ऐसा था कि मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि हुआ क्या एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट फ्रॉम हियर ऑन. So let us just look at what was the morning tweet. So morning tweet बहुत clearly mentioned that 24,170 is the level which has to break on the upside for us to be on riding on the buy side for the targets of 24,250 possibly for along with that 24,320 levels. लेकिन वो लेवल आया ही नहीं. 24,170 नहीं आया. निफ्टी ने हाई बनाया 24,135 का, वहीं से रिवर्स हो गया. नीचे का जो सपोर्ट लेवल था वो 23,040 के आसपास था. 23,020 वो दैट वाज द माइनर सपोर्ट. देन 23,970. नाउ जैसे ही 23,970 ब्रीच हुआ which means something was changing in the market and market was not in a mood to go up. And मैंने immediately tweet किया that 23,970 is broken. Get cautious. Do not buy this market right now. We need to wait for it to again bounce back about 24,103 gain level. ऐसा और ओवरऑल ट्रेंड हुआ क्या, अभी पैटर्न क्या है और करना क्या है. देखिए सिंपल सी चीज है कि भाव भगवान से. सो प्राइस इज गॉड. वी डोंट वांट टू फाइट द ट्रेंड. सो 23,970 सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वी शुड बी not looking for buying, but we should be getting cautious. Now, before I move on into the analysis, I just want to know if these short videos and post-market analysis is useful for you. So I'll make such short videos more often. And let me share across the quick disclosure and a disclaimer. यहाँ पर we are SEBI registered research analyst. Investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. Keep that in mind. And a quick disclosure here. तो was the such a big sell of expected? नहीं, honestly मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा कि 23,820 का जो लेवल है वो भी ब्रीच हो जाएगा. सो बाय द फाइनल आवर वो भी ब्रीच हो गया एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड. आई वाज एक्सपेक्टिंग इट विल बी रेंज बाउंड मार्केट एंड नीचे में 23,970 सपोर्ट इंटैक्ट रहना चाहिए. लेकिन जब 23,970 ब्रेक हो गया प्राइस एक्शन से, सो वी शुड बी कॉशियस कि भाई वो नहीं हो रहा है एंड देन एनालाइज की व्हाट हैज चेंज इन द मार्केट. सो लेट मी वेरी क्विकली डाइव इनटू व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट लुक लाइक एंड व्हाट अबाउट द टाइम साइकिल. ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा. बट बिफोर आई मूव ऑन, आई वांट टू नो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस देन रीट्वीट अक्रॉस, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. आई गोइंग टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑल. सो बहुत ही क्विकली पहले तो ये देखना है हमें that the overall trend which was there was range bound. And now what has happened is since the morning market का जो रुझान था और ट्रेंड था on a 1 hour time frame chart had been on the sell side. So if I look at the 915 candle, we formed a bullish candle, sideways action हुआ, and then we started seeing a sell off from 1115 onwards, and that was a very very steep decline that we saw on 1 hour time frame chart. और उसके बाद से the selling pressure continued. Now what has happened, the overall trend, what is the overall trend of the market and what are we seeing over here? So if you look at the overall trend on the daily time frame chart, if I go and check on the daily time frame chart, yes, the overall trend has again 3 candlestick rule के हिसाब से bearish turn हो चुका है. That is one. Secondly, market important supports यहाँ पर जो 23,820 था वो breach हो गया. So is it time to buy? I would not buy a red candle. So let me just show you what is the wave pattern and that we are looking at. उसके बाद clarity ज्यादा आ जाएगी. So if we are looking at this overall movement, यहाँ पर we got wave A on the upside. This was wave B completed. We are in wave C right now. This wave C is subdividing. Now overall, if I look at the entire pattern, the movement from here, this was wave 1 of C, this was wave 2 of C, this was wave 3rd, 4th, and then we completed 5th of C. यहाँ पर एक 1 complete हुआ. We are in wave 2. So A and that was wave B. So यहाँ पर and now we are falling in the form of wave C as of now. Earlier we were expecting that this will be a sideways kind of a wave 2, but instead of sideways it became like a flat corrective pattern in the form of wave 2 which is currently ongoing.
As per new wave logic, this wave 2 should now take more time than wave 1, which gives us a date and time as Thursday 3:15. तो तभी तक आइडियली ये हाई नहीं निकलेगा. So we know 24,200 will not break for at least around Wednesday and Thursday until the right. So 2 दिन है हमारे पास में हाई नहीं निकलने वाला. लोअर साइड पे प्राइसेस शुड आइडियली नॉट रिट्रेस मोर देन 23,630. सो ये गैप एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए बिकॉज दैट्स द पावर सेंटर एरिया. दिस इज द पावर एरिया विच इज अ गैप. So we should not go below 23,620 level. That's the zone. Now I am able to identify 23,620 के नीचे नहीं जाएगा, 24,200 के ऊपर नहीं जाएगा, which means we will be now moving in a non-trending fashion, in a overlapping fashion for next 2 days, which will be tricky for trading. एंड इसीलिए स्प्रेड बनाना पड़ेगा. एंड 2 दिन से आप देख रहे हो मैं कह भी रहा हूं कि ऑप्शन स्प्रेड बने हैं, जिससे क्या होगा, लॉस कम होगा अगर रॉन्ग हुए तो, और राइट हुए तो पैसा बनेगा. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज we need to ride this sideways action by way of selling options. ओटीएम कॉल राइड कर सकते हैं, ओटीएम पुट, बट ओवरनाइट पोजीशंस अभी कैरी नहीं करनी है. लॉन्ग पोजिशनली नहीं जाना है, स्कैल्प करना है. अगर निफ्टी नीचे आता है यहां से, तो कल की स्ट्रेटेजी क्या होगी मेरी? इफ यू सी निफ्टी अराउंड 23,720 730 ऑड लेवल्स, आई एम गोइंग टू बेट ऑन अ रिवर्सल. ओके, 23,720 के आसपास रिवर्सल पे बेट करेंगे. 23,620 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन वी विल एक्सपेक्ट इट टू गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 23,900 एंड 910 के आसपास वापस. सो होगा क्या, मेरा रिस्क कितने पॉइंट्स का होगा? मेरा रिस्क होगा 100 पॉइंट्स का. मेरा रिवॉर्ड्स अगर सही गया तो आई विल बी एंडिंग अप मेकिंग समवेयर अराउंड 180 190 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट. सो रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू बी टू मच स्ट्रिंजेंट कि नहीं नहीं मैं 910 तक ही निकालूंगा. नहीं, आई एम नाउ गोइंग टू बी लुकिंग फॉर स्कैल्प. 100 पॉइंट्स पे आया, पार्टी पी बुक करो, ट्रेल करो, और ऊपर आया बुक करो और निकल जाओ. आई एम नॉट गोइंग टू मेक मोस्ट ऑफ दिस ट्रेड नाउ. नाउ बाय के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेल साइड करना है. आइडियली तो डेली कैंडल बेरिश हो चुका है. अगर मुझे सेल करना है, सेल में रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगी. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां सेल करता हूं, मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर है, यहां स्टॉप ही नहीं, बीच में 24,100 का स्टॉप आ रहा है मेरा, और टारगेट बहुत नजदीक है. तो मुझे सेल पे अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है. भले ही वो 23,620 कल ब्रेक कर दे, भले ही वो 23,500 चला जाए, लेकिन मैं सेल करके पैसा बनाना नहीं चाह रहा हूं बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बेट नहीं है. रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा कब? जब 23,900 चला गया वो, फिर रिवर्स हो रहा है, तब रिस्क रिवॉर्ड सेल साइड पे बैठ जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू नाउ ट्रेड डायरेक्शनली, आई एम गोइंग टू ट्रेड रिवर्सल्स. रिवर्सल के लिए बैंड्स, बॉलिंगर बैंड्स वर्क वेल, सो यू कैन अप्लाई दैट मेथड. रिवर्सल ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, लॉन्ग पोजीशंस अभी क्रिएट नहीं करनी है हमें, वापस से ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेनी है. आई विल अलर्ट व्हेन वी अगेन गो पोजिशनल. व्हाट इफ 23,620 ब्रेक्स? We'll see when that happens. What is the market playing out? We'll see then. But for now, I'm still looking at it as wave 2 formation. Might take 2 more days. Going to trade the range. Option selling कर सकते हो आप इस range के लिए, लेकिन stop loss के साथ काम करना है. That is very, very crucial. So that is what I thought. We'll make a short video here. And I'm seeing, what about the time? So the time cycle was अराउंड द एरिया ऑफ 115 130 के पास में, बट मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी चाहिए था, जो मिला ही नहीं. सो पॉजिटिव प्राइस एक्शन, ऑलवेज रिमेंबर विद टाइम साइकिल वी नीड टू सी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, बट पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं आया. क्यों नहीं आया? भाव भगवान से, can't do anything. नहीं आया तो we need to change our strategy, we need to change our stand. पॉजिटिव प्राइस एक्शन आता, वी वुड हैव बीन एबल टू मेक अ किलिंग अगेन, बट नहीं आया तो छोटा स्टॉप लो और निकल जाओ. दैट इज द स्ट्रेटेजी, दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड. तो चलिए, ये शॉर्ट वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, लेकिन आज मार्केट का मूवमेंट ऐसा था, आई थॉट आई मेक इट फॉर यू. इफ यू लाइकिंग इट, सब्सक्राइब करिए चैनल को. यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए. वी आर गोइंग टू बी रीचिंग दैट 1 लाख माइल वेरी सून. एंड डू नॉट फॉरगेट टू रीट्वीट एंड कमेंट डालिए. ट्विटर पे आप देख रहे हो, जिससे मुझे पता चले जितना रीट्वीट होगा, आई विल नो दीज वीडियोज आर यूजफुल फॉर यू. एंड कल की स्ट्रेटेजी मॉर्निंग में मैं पब्लिश करूंगा. डू नॉट फॉरगेट टू सी इन द मॉर्निंग बाई 8:30 आई पब्लिश व्हाट इज द एग्जैक्ट लेवल. बट ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए कल के लिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल टाइम. बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर. और एक दिन के सेल ऑफ से, एक दिन के लॉस से डरना नहीं है.
लॉस छोटा कर रहा है, जब रिवर्सल आया तो बड़ा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।